Hello friends, welcome to learning REVIT Dynamo. And if you are very new to Dynamo and you don't know about the Dynamo, so this is the video for you that what is the REVIT Dynamo and how it will be useful in our day-to-day REVIT work, whether it is architectural, structural and MEP. So for those who are very new to Dynamo, let me give you one introduction related to the Dynamo. So Dynamo is a visual programming language. Dynamo जो है वो visual programming language है. Like other language, it works by linking the simple elements together to form more complex idea. Okay? तो suppose मुझे complex structure create करना है, complex modeling करना है, और मेरा जो modeling है उसको number of time repeats करना है with different parameter with different complex idea, तो वो सब मैं डायनेमो के थ्रू करवा सकता हूँ. सो डायनेमो में हम क्या कर सकते हैं? सो बेसिक फंक्शनल इनपुट्स लाइक नंबर स्ट्रिंग कैन बी सिलेक्टेड ईदर बाय ब्राउजिंग और सर्चिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑन द लेफ्ट कैनवास. अभी सबसे पहले रेविट ओपन करने के बाद यहाँ से मैं न्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ आर्किटेक्चरल टेम्पलेट. अब सबसे पहले डायनेमो डायरेक्टली आपके पीसी में रन नहीं होगा. सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ेगा एंड थ्रू द प्रोजेक्ट यू कैन ओपन द डायनेमो. सो यू हैव टू ओपन अ वेरी ब्लैंक प्रोजेक्ट और ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. क्लिक ऑन द मैनेज टैब, क्लिक ऑन डायनेमो. डू नॉट क्लिक ऑन डायनेमो प्लेयर. डायनेमो प्लेयर क्या है वो हम आगे दिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्लिक करना है डायनेमो. तो ये डायनेमो का एक नया विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा. सो डायनेमो पे क्लिक करते वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो गया है. यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हो सो यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री एंड सिंपली क्लिक ऑन क्लोज दिस डायलॉग बॉक्स एंड देन in the dynamo click on new. ओके. सो डायनेमो ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं न्यू में क्लिक करता हूँ, कंट्रोल एन, या तो फिर गो टू फाइल एंड न्यू एंड यू कैन क्लिक ऑन न्यू वर्कस्पेस और होम वर्कस्पेस, राइट. एंड कस्टम नोड वी विल सी लेटर ऑन व्हाट इज कस्टम नोड. तो सबसे पहले मैं होम वर्कस्पेस या तो फिर यहाँ पे न्यू में क्लिक कर रहा हूँ. तो यहाँ पे न्यू में क्लिक करने के बाद एक ब्लैंक स्क्रिप्ट, डायनेमो में आप स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हो. तो एक ब्लैंक स्क्रिप्ट की फाइल आपके पीसी पे ओपन हो जाएगी. एंड देन आफ्टर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टॉप थिंग दैट इज अवर मेनू बार, दैट इज फाइल, एडिट, व्यू, पैकेजेस, सेटिंग्स, हेल्प. These are some toolbars like in the toolbar there is a one command called new, then after open, then after save, then after undo, redo and so on. On the left side is library panel where you can search the nodes, क्योंकि डायनेमो में हम नोड को यूज करेंगे और वो नोड को हम सर्च करवा सकते हैं थ्रू द लाइब्रेरी. आई विल शो यू कि ये सब हम कैसे कर सकते हैं. देन आफ्टर ये जो हमारा है दैट इज workspace, right, where we have to deal with the different type of node and we have to generate output as per our requirement. Okay. यहाँ पे दो विंडो है, one is enable 3D background and another is enable graph view. तो अगर मैं यहाँ पे enable 3D background को करूँगा, zoom in zoom out, my background will be zoom in zoom out, and if I will be click on the graph, my graph will be zoom in zoom out. अभी यहाँ पे मैंने ग्राफ तो क्रिएट किया नहीं है, तो जब मैं ग्राफ क्रिएट करूंगा और जूम इन जूम आउट करूंगा तो वो ग्राफ मेरा जूम इन जूम आउट होगा. सिमिलरली ये जूम टू फिट है, जूम इन जूम आउट, पान, सिंपल कमांड. एंड एट द बॉटम इज द स्टेटस एंड वी हैव टू कीप लेट्स से ऑटोमेटिक सो दैट ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रिप्ट रन होगी. अगर आपकी स्क्रिप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन एवरी टाइम और आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही उसको रन करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन मैन्युअल. आप सब मॉडिफिकेशन करो अपनी स्क्रिप्ट में और चेक करते वक्त आप यहाँ पे
रन पे क्लिक कर सकते हो एंड शॉर्टकट टू रन द स्क्रिप्ट दैट इज F5। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट में F5 लिखा है, सो F5 से आप उसकी जो स्क्रिप्ट है वो रन करवा सकते हो। ओके, सो now we are clear what is Dynamo. Dynamo is the visual programming, and what are the things used in Dynamo, that is nodes, that nodes are used in the Dynamo. अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू Dynamo का हम कैसे यूज कर सकते हैं उसका मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। सो हियर विथ आई हैव वन फाइल। सो फर्स्टली लेट्स से मुझे 3D में एक लाइन ड्रॉ करनी है and that line should be vary as per the input. So if I will be change the input, my location of the line, that is starting point of the line, ending point of the line, both should be vary. Okay, and what should be the coordinate of that line, that I also want to be check it out. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, let's say I will be go to the Dynamo and you can right click on the screen and you can search for the node, या तो फिर आप यहाँ से भी उसको सर्च करवा सकते हो। So let's say first I will be search for the node number, that is number। Now अभी आप देख रहे हो कि मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो मेरी जो स्क्रिप्ट है, ग्राफ है, वो जूम इन जूम आउट हो रहा है। If I will be click on enable 3D preview background, that is by Control B, now my 3D background is zoom in zoom out. Again Control B, graph is zoom in zoom out. Again Control B, 3D background is zoom in zoom out. So this is the primary basics thing that you need to understand, that is how to switch between the graph view and 3D background view. Now after giving the number, here you can see you can toggle between 3D navigation and node navigation with the geometry or node buttons. In the lower right screen, this is geometry and node buttons, right? Background preview can be also turn on, turn off from the view. Okay, so this is one node number that we have placed at here. Now let me type the number, let's say 6. Okay, so 6 is the number. So this is the one way to give the number. Another way to give the number, that is number slider. In the number slider, you have three options: minimum, maximum and step. Okay, minimum से आप उसकी minimum value दे सकते हो, maximum से उसकी maximum, और step, step यानी कि अगर ये sliding आप करते हो तो कितने इंटरवल पे वो step होना चाहिए, right? So let's say minimum number is, let's say 0, maximum number is, let's say 50, and it should be slide with the interval of 1. So you know, if I'm clicking and drag, as you can see, it is going to be change 7 to 8, 9, 10 and so on, right? But if I change the interval to 0.5, now it is going to be changed in the interval of 0.5. As you can see, 25.5, 26, 26.5 and so on, right? My maximum value is 50, so it will be goes maximum is 50, right? Now this is the another way to give the number. If you have the fixed number that cannot be changed, you can give it by this method. If you have the number that you want to be changed, you can give by this number slider node. As we will proceed further for the training, you will be come across the various nodes. आप जैसे जैसे ट्रेनिंग में आगे बढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के नोड हम यूज करके कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री या तो फिर किसी भी तरीके का हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। Now, if you want to locate the point, there is a node of point by coordinates. So I'm right click it here, point by coordinates, and you can simply click and drag x. Let's say my x value is 6. As you can see, the point here is shifted to the x6. By default y value is 0, and by default z value is 0, and by default x value is also 0. If you are not specifying any x value, by default your point should be 0, 0, 0, right? So let me give x value is this, and
z value is this. So as you can see, ये जो मेरा point है, that point is now located with the x value and with the z value. So this is how you will be able to change your x and z value of your point. Now another point, so right click point by coordinate, which I want to keep as it is with 0, 0, 0. So x value is default 0, y value is default 0 and z value is also default 0. तो अभी मेरे पास आप देख सकते हो कि I have the 2 points. One point here, another point here. If I'm clicking here, this is my first point. Clicking here, this one is my second point. Now I want to draw the line, right? I want to draw the line. If I want to check the coordinate of this, I can right click at here and let's say watch. Watch node is used to see the output. And there are two watch nodes. One is 2D and another is 3D, right? So you can right click and let's say watch. Okay. And this is another watch node. So this is the coordinate x0, y0, z0. This is the coordinate x66, y0, z60. As you will be change here, it will be automatically change in the background. It will be automatically change in the watch node. So this is the power of Dynamo. If you will be change the input, output will be automatically changed. If your output is not changed, make sure your option should be automatic. Let's say I have set it to manual and I have changed, and as you can see, nothing is going to be changed here. Why? Because your run script is set to the manual, so you have to click on F5. That is also one purpose why we have to set it to manual, because if we will work in the complex geometry, at that time we have to set it to the manual. Otherwise, every time if you will be change, automatically it will be change the output and unnecessarily your script will be run with the slow. So if you have very more number of nodes, अगर आपके पास number of node बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको सेट करना होगा that is by the manual. और अगर कम है so you can set it automatically. तो जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. Okay, good. Now next thing is what we want to draw the line by specifying starting point and ending point. So I can right click here, line by start point and end point. ठीक है? So start point मैं specify करता हूँ this one, end point मैं specify करता हूँ this one. So as you can see, my line is drawn. This is my line. Line is drawn with specifying start point and end point. Now, if I will be change the input, as you can see, my point is also going to be changed. My coordinate is also going to be changed, and my line is also going to be changed, connecting those 2 points, right? And if you want to see this line in 3D, so you can use watch 3D. So right click, watch 3D, and you can drag this line to this watch. So as you can see in the 3D, now here you can also do the zoom in zoom out. See, if you zoom in zoom out at here, it will be zoom in zoom out the graph. बट यहाँ पे अंदर कर्सर रख के आप zoom in zoom out करोगे तो ये 3D की जो लाइन है वो zoom in zoom out होगी, right? So this is the way that you can use the Dynamo, and this is the one very simple example that you can use the number slider or simply number. You can assign point by coordinates. Then after you can connect a line by specifying starting point and ending point. Okay. Okay. So now we have seen कि किस तरीके से हम नंबर नंबर को यूज कर सकते हैं, पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट को यूज कर सकते हैं और दोनों पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट करवा सकते हैं. Now let us we will save this script. So you can save and you can give the name and the type of the file in which Dynamo is saving is that is .py. Right now I'm not saving, I'm just closing, or you can simply select all the nodes, right click and remove. But I will recommend you will be just save the script. So let me close this, and I want to create a new script again. Abhi, let me show you related some list of the points.
क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपको लिस्ट को मैनिपुलेट करना होता है, ओके, कि उसको किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं. लेट मी शो यू बाय द एग्जांपल so that you can able to understand. As you can see, list of data can be generated with sequences and ranges. So these are the two things. One is sequence and one is ranges. This list can be recognized with many other nodes for the specific purpose. और ये लिस्ट को आप दूसरे कई स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हो. So first, let me show you the basics overview of this, and then after we will see or we will create some complex shape. और उसमें ये सभी नोट्स को यूज करके कैसे कॉम्प्लेक्स शेप हम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. So let us, I will be give the number. Okay, you can give the number or number slider, anything, right? So I will be go to the Dynamo, right click and let's say number. पहले मैं नंबर यूज कर रहा हूं और लेट्स से फिर मैं यूज कर रहा हूं नंबर स्लाइडर. सो नंबर स्लाइडर, ओके, एंड वापस नंबर. Now you can also right click here and change the background, right click and feed to the screen. As you can see, turn off the pan, so you can click and drag. If pan is on, you can always do the pan. So pan को आपको ऑफ कर देना है, right? Now next thing is again right click and say number. So I have inserted 3 numbers. Let me give the range. 1 से start हो रहा है, let's say 40 पे end होगा and interval should be around 2. So 1, 3, 5, 7. Okay, let's say 2 से start हो रहा है. Interval is 40. Sorry, interval is 2 and maximum is 40. So 2, 4, 6, 8 like that. Okay. Now after that we want to give the range. So our starting range is this one, ending range is this one, and our interval will be this one, right? And we want to find the range. We want to find the numbers. We want to find the output of those numbers. So what you can do, you can go here and then after, let's say, right click and say range. Now your starting range is 0. Your ending range is, let's say, 40. And your interval is, let's say, 2. So what is the output? अगर आप यहाँ पे माउस रखोगे and pin this, so this is the output. 0, 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6. So these are the list of the number that you will be give or that you will be receive from the output. अभी यहाँ पे देखो दो चीजें है, L1 and L2. L1 is the main list. This is the main list. And L2 is the sub list. फिर L3 भी हो सकता है. Let's say 0 के अंदर भी मैं लिस्ट बना सकता हूँ. So that one will be L3. So L1, L2, L3 like that. Okay. Good. Next thing is what? You can use the watch node so that you can have the property. So output of that node. So let's say watch node. ये सीक्वेंस को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. तो देखो आप 0, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे मुझे ये आउटपुट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. okay, यहाँ से ही मैं उसका आउटपुट देख सकता हूँ. अगर मैं यहाँ पे इनपुट चेंज कर रहा हूँ, so as you can see number of points are decreasing at here as well. Now maximum is 28. So here it is also 28, right? So this is the range node. Now अभी ये लिस्ट को मुझे उसका जो लास्ट आइटम है वो मुझे चेक करना है. ओके, सो लिस्ट डॉट लास्ट आइटम. जैसे ऑटोकैड में कैसे डिफरेंट डिफरेंट कमांड है वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स है. So right click and list dot last item. Okay, and what is the list? List is this. What is the output? Output is 28 because as we can see the last number is 28.
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसे रिक्वायरमेंट है, तो मेरी जो लिस्ट है उसमें से मुझे लास्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, मेरी जो लिस्ट है उसमें से मुझे फर्स्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट? सो राइट क्लिक फर्स्ट item, and first item is, let's say, this. So as you can see, my first item is 0, उसको मैं टॉप में रखता हूँ. My first item is 0 and last item is 28, and in between items are this, right? So you can also filter your list by specifying first item or what is the last item. Now if you will be change the input, obviously the input will be going to be changed. Let's say it is starting from the 10. So as you can see, your first item is 10, last item is 34. It is also 10 and 34, right? Now let us, we will go to the list.chop. List.chop means we want to chop this list at the length of the tree. Now what is that? What is the meaning of that? Let me show you. List.chop. See, list is what? This is the list. And let me see the output. So watch node. Sorry, not watch 3D, but only watch node. And list. Now what is the length? We want to divide the list into the 3. So I can right click and say number. And number is, let's say, 3. यहाँ पे देखो 3 के पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया. सो 10, 12, 40. दिस इज द फर्स्ट लिस्ट. 10, 12, 40. Then after second list is what? 16, 18, 20 and so on. As you can see, 16, 18 and 20. So यहाँ पे देखो आप. See, if you will be see here, what is the difference between this and this? Here all the list is given in one range. 10, 12, 16, 14, 16, 18, like that. But here the list is given into subcategories. So as you can see, main list is, see here main list is L1. This is also main list is L1. The secondary list is L2, that is 10 to 34. Here secondary list is 0, 1, 2, 3 and up to 4. And here third list is not there, but here the third list is what? Is sub list. 10, 12, 40, 16, 18, 20 and so on. अभी ये मैंने 3 नंबर में डिवाइड किया है, मुझे 2 का ही लिस्ट चाहिए. So as you can see, 10, 12 एक लिस्ट बन गया, 14, 16 दूसरा लिस्ट बन गया. अब इसका पर्पस क्या हो सकता है? लेट्स से उसमें से मुझे लिस्ट नंबर 1, 3 और 5 को यूज करना है, राइट? So I can filter the list number 1, 3, 5 and so on. Okay. So सबसे पहले मैं आपको ये सब नोड्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. Then after we will go for the some complex geometry base. So I hope कि ये लिस्ट का जो रेंज है वो किस तरीके से वर्क करता है वो लिटिल बिट आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि रेंज में 3 चीज स्पेसिफाई करनी होती है, स्टार्टिंग, एंडिंग एंड स्टेप्स. तो उसमें से हमें लिस्ट मिलता है. अभी मान लो कि यहाँ पे मैं एंड देता हूँ 400, मेरा लिस्ट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. देखो, ओके, एंड मैक्सिमम इज 400. So as you can see, this is our maximum, and here as you can see, the maximum is 400. Can you see? हमारा लिस्ट भी ज्यादा हो गया, ये लिस्ट भी ज्यादा हो गया. So everything is based or reflected as per the input, as you can see, right? So here the maximum number is 400, but right now the number is 232. Maximum number is 400, but right now the number is 232. So let me change to the 400. अभी यहाँ पे भी मैंने 400 कर दिया है. यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 400, as you can see. एंड यहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर कितना है? 400, राइट? और यहाँ पर भी 400 का लिस्ट हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. देखो कितना सारा लिस्ट बन गया, राइट? ओके. अभी इसका भी आप लिस्ट चॉप कर सकते हो कि मुझे पहले 5 के लिस्ट में डिवाइड करना है, फिर 2 के लिस्ट में डिवाइड करना है, लाइक दैट. ओके. So this is the way that let's say here I want to divide first 10. So as you can see 10 के लिस्ट में वो डिवाइड हो गया, right? So as you can see 10, 12 up to 28, then after 30. तो ये 10 नंबर. अभी डायनेमो में
स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। ओके, सो 10 नंबर, तो आप देखो किस तरीके से उसने काउंट किया है, 0 1 2 3 4 अप टू 9, तो उस तरीके से वो 10 नंबर लेगा। तो डायनेमो में पहला जो नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से ही होता है, वो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। ओके, तो अभी 10 लिस्ट में डिवाइड हो गया। अभी मैं वापस लिस्ट डॉट चॉप को करता हूँ, और उस टाइम में लिस्ट को ये वाला लिस्ट डालता हूँ, और उसको मुझे डिवाइड करना है नंबर लेट से 5 में, राइट। So let me give to this, and let me right click and let's say watch node. So can you see that is a list of list? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ L1 L2 थे, यहाँ पे L1 L2 L3 आ गए, और यहाँ पे L1 L2 L3 एंड L4। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट है 10 12 14 15, और उसको भी मुझे डिवाइड करना है लेट्स से 5 में, 5 की रेंज में, या तो फिर जो भी मेरी रेंज है उसमें मुझे डिवाइड करना है, राइट। So this is how you will be changing the range, right? So let's say if I want to change to the 2, right? So that one will be wow. So right click and say remove, right click and say remove, and right click and say remove. Okay. So this is the way that you can use the range node in the Dynamo.